नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर एचआर और फाइनेंस टीमों की रातों की नींद उड़ा देता है। जी हाँ, नए कोड ऑन वेजेस के तहत वेजेस यानी वेतन की कानूनी परिभाषा। कानूनी भाषा अक्सर बहुत उलझाने वाली होती है, लेकिन आज हम इस पूरी कानूनी संरचना को परत दर परत एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल, क्या मौजूदा पेरोल संरचना इस नए कोड का 100% अनुपालन करती है? सच मानिए, पेरोल प्रोफेशनल्स के लिए ये किसी बड़े रिस्क से कम नहीं है, क्योंकि अगर वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन में थोड़ी सी भी चूक हुई तो भारी भरकम जुर्माना और ऑडिट का सिरदर्द पक्का है। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज के हमारे इस डिस्कशन का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले, ये परिभाषा महत्वपूर्ण क्यों है? दूसरा, इसकी मुख्य कानूनी परिभाषा क्या है? तीसरा, इसमें किन चीजों को शामिल किया गया है और किन्हें बाहर रखा गया है? चौथा, 50% टेस्ट की बारीकी और आखिर में 5 विशेष नियम और प्रावधान। तो शुरू करें। बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ। ये परिभाषा आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और ये कैसे अनुपालन जोखिमों यानी कंप्लायंस रिस्क्स को कम करती है? देखिए, अगर पेरोल को धारा 2 के तहत सही तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है तो सच में खतरे की घंटी बज सकती है। कोई भी छोटी सी गलती सीधे पेनल्टी, कर्मचारियों के साथ विवाद और ऑडिट के दौरान बहुत ही नेगेटिव नतीजों में बदल सकती है। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि एक बेहद सख्त लीगल बाउंड्री है जिसे मानना ही होगा। अब सवाल उठता है कि ये सटीक वर्गीकरण या एक्यूरेट क्लासिफिकेशन इतना क्रिटिकल क्यों है? आसान शब्दों में कहें तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जीरो डिफॉल्ट कंप्लायंस हासिल करने का बस यही एक रास्ता है। ये न्यूनतम वेतन और बोनस की कैलकुलेशन में होने वाली गलतियों को एकदम रोकता है, डिफरेंशियल वेजेस के दावों से बचाता है और सीटीसी स्ट्रक्चर को सही से सेट करता है। इससे एचआर, लीगल टीम और टॉप मैनेजमेंट सबको एक जबरदस्त क्लैरिटी मिलती है। चलिए अब अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, मुख्य कानूनी परिभाषा, जो दरअसल इस धारा 2Y की असल नींव है। अगर हम वेतन की कोर लीगल डेफिनेशन को पढ़ें तो ये कहती है कि धन के रूप में व्यक्त किया गया वो सभी पारिश्रमिक जो किसी नियोजित व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए काम के लिए दिए हैं, बशर्ते रोजगार की शर्तें पूरी की गई हों। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसमें हर उस कॉन्ट्रैक्चुअल पारिश्रमिक को व्यापक रूप से कवर किया गया है जिसे पैसों में मापा जा सकता है। बस यही वो मजबूत आधार है जिस पर पूरा वेतन ढांचा टिका हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, शामिल बनाम बाहर रखे गए घटक, मतलब स्पष्ट रूप से क्या अंदर है और क्या बाहर है। अब यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि कानून स्पष्ट रूप से 3 चीजों को वेतन की परिभाषा में हमेशा शामिल करता है। पहला है आपका बेसिक पे या मूल वेतन, दूसरा है महंगाई भत्ता यानी डीए और तीसरा है रिटेनिंग अलाउंस। ये तीनों कंपोनेंट्स यूनिवर्सली वेतन का हिस्सा माने जाते हैं, मतलब इन्हें किसी भी हालत में बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये तुलना अक्सर पेरोल से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमियों को दूर कर देती है। एक तरफ हमारे पास स्पष्ट समावेशन है जैसे बेसिक पे, डीए और रिटेनिंग अलाउंस, और वहीं दूसरी तरफ कुछ विशिष्ट बहिष्करण या स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स हैं जिन्हें सख्त कानूनी सीमाओं के अंदर रखा गया है, जैसे बोनस, एचआरए, वाहन भत्ता और पीएफ। इन दोनों के बीच का ये फर्क एकदम शीशे की तरह साफ होना चाहिए। आइए जरा इन बड़े एक्सक्लूशंस पर एक बारीकी से नजर डालते हैं। खंड ए से के के बीच कई ऐसे घटक हैं जिन्हें मूल वेतन से बाहर रखा गया है, जैसे बोनस, सुविधाओं का मूल्य, एम्प्लॉयर का पीएफ कंट्रीब्यूशन, वाहन भत्ता, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए, ओवरटाइम, कमीशन, ग्रेच्युटी और छटनी का अमाउंट। लेकिन एक मिनट रुकिए, इन्हें केवल शुरुआती तौर पर बाहर रखा गया है, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है जो इस पूरे कानून को बेहद दिलचस्प बना देता है। और वो ट्विस्ट छिपा है हमारे चौथे भाग में 50% टेस्ट की व्याख्या। यह है पहला प्रावधान और अतिरिक्त बहिष्करण नियम। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है ये 50% की थ्रेशोल्ड। कानून ये साफ कहता है कि अगर खंड ए से आई तक के बाहर रखे गए भत्ते टोटल पारिश्रमिक के 50% से ज्यादा हो जाते हैं तो एक स्पेशल नियम ट्रिगर हो जाता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भत्तों के नाम पर अनलिमिटेड अमाउंट को वेतन से बाहर नहीं रखा जा सकता। है ना कमाल की बात? चलिए इसे इन 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले टोटल पारिश्रमिक कैलकुलेट करें। स्टेप 2, फिर उन राशियों को पहचानें जिन्हें बाहर रखा जा सकता है।
स्टेप 3, अब इन एक्सक्लूडेबल अमाउंट्स को उस 50% की लिमिट से कंपेयर करें। और स्टेप 4, अगर ये अमाउंट 50% से ज्यादा है तो उस अतिरिक्त राशि यानी एक्सेस अमाउंट को कैलकुलेट करें और उसे वापस वेतन में जोड़ दें। ये शानदार फॉर्मूला ये पक्का करता है कि वेतन को अलग-अलग भत्तों में तोड़कर उसे आर्टिफिशियली कम न किया जा सके। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, विशेष नियम और प्रावधान, जिसमें हम लैंगिक समानता और इन काइंड बेनिफिट्स यानी वस्तु रूप में मिलने वाले लाभों को समझेंगे। ये नियम बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है कि पे इक्विटी को कैसे मेंटेन किया जाता है। जब बात समान वेतन और लैंगिक समानता की आती है तो जो घटक आमतौर पर बाहर रखे जाते हैं जैसे वाहन भत्ता, एचआरए या ओवरटाइम, उन्हें वेतन की कैलकुलेशन में शामिल करना बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि स्ट्रक्चर के नाम पर किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। और ये जो 15% का नंबर है, ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट हार्ड कैप है। मान लीजिए किसी कर्मचारी को कैश के बदले कोई इनकाइंड बेनिफिट दिया जाता है तो उसे वेतन का हिस्सा तो माना जाएगा, लेकिन सिर्फ कुल वेतन के 15% तक। इस 15% की लिमिट से ऊपर की कोई भी वैल्यू इस खास वेतन की डेफिनेशन में काउंट नहीं होगी। अब इस टेबल को देखिए, ये इस बात की एक बेहतरीन समरी है कि रियल लाइफ सीटीसी क्लासिफिकेशन में ये सारे कंपोनेंट्स कैसे फिट बैठते हैं। बेसिक पे हमेशा स्पष्ट रूप से शामिल होता है, एचआरए बाहर तो है लेकिन उसी 50% टेस्ट की शर्त के साथ, और फूड कूपन जैसी चीजें सशर्त रूप से शामिल हैं, बस उस 15% के लिमिट के भीतर। इस तरह की क्रिस्टल क्लियर मैपिंग ही आपको जीरो डिफॉल्ट कंप्लायंस तक ले जाती है। तो इसी के साथ हम इस डीप डाइव के आखिर में पहुंच गए हैं। लेकिन जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, अगर मान लीजिए कल ही कोई अचानक से ऑडिट हो जाए तो क्या वो 50% टेस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पेरोल में छिपी हुई किसी गड़बड़ी को पकड़ लेगा? ये सोचने वाली बात है और अपने पेरोल सिस्टम्स को रिव्यू करने का एक बेहतरीन मौका भी। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। You know, if you've ever felt totally overwhelmed by payroll compliance, trust me, you are absolutely not alone. Today, we're jumping right into this explainer to completely unpack the strict legal definition of wages under Section 2Y of the Code on Wages 2019. We're going to take all that dense, intimidating legal text and turn it into practical, everyday knowledge. Okay, so here's our roadmap for today. We'll be covering why this definition actually matters, the core definition and inclusions, the specific statutory exclusions, the crucial 50% test, provisos and in-kind benefits, and we'll wrap it up with a total wage classification summary. Section 1. Why this definition matters. Looking at the high stakes and compliance risk. Listen, the scale of the compliance hazard we're dealing with here is just immense. Misclassifying even a single CTC, cost to company component, it can literally cause massive systemic failures across your whole organization. We are not just looking at a minor slap on the wrist here. We're talking steep financial penalties, huge employee disputes over differential wages, and incredibly adverse audit findings. Misclassifying even one tiny allowance basically cascades through your entire payroll system. But let's look at the flip side, right? If we accurately classify exactly what forms part of wages according to the official text, this law actually becomes a powerful shield for your organization. It basically guarantees zero default compliance for minimum wages, accurate payment of those wages, precise bonus calculations, and, well, the whole shebang when it comes to statutory obligations. Getting this right from the get-go protects your organization from the ground up. Moving on to Section 2, Core Definition and Inclusions, Building the Foundation. So, the law defines wages super broadly as any contractual remuneration, whether that's salaries, allowances, or really whatever else that is capable of being expressed in money terms. But here's the kicker. It is explicitly tied to the fulfillment of the terms of employment. Essentially, if it's a contractual payout that you can express in cash for work done, it fundamentally starts out right there in the wage bucket. To keep this really simple for us, let's contrast the direct inclusions against the sort of extraneous elements that are initially kept out. The law explicitly pulls in basic pay, dearness allowance, and retaining allowance. These are the universally included foundation stones of your pay structure. Literally everything else, well, that's subject to specific scrutiny and potential exclusion. All right, Section 3, the specific statutory exclusions. Basically, what stays out? Now, the government actually allows 11 specific statutory exclusions. They're logically grouped from clauses A through K.
We're talking about standard components here, things like the statutory bonus, house rent allowance, or HRA as we all know it, conveyance, employer provident fund and pension contributions, and gratuity. So, on the surface, these do not count as wages. But you absolutely have to pay close attention here because there is a massive catch coming right up. Which brings us to Section 4, the crucial 50% test, the excess exclusion rule. Guys, this is easily the most critical mechanism in this entire legal code. It's known as the first proviso, and it completely overrides the standard rules we literally just talked about. Why would they do that? Well, to prevent companies from artificially reducing wages by splitting an employee's pay into endless excludable allowances just to save on statutory contributions. It's a real game changer. That magic threshold number, it's exactly 50%. If the payments made under those specific exclusions from Clause A through I total more than half of the employee's total remuneration, boom, it triggers a strict compliance trap. You just can't infinitely hide salary and allowances anymore. The government caught on to that. Let's actually break down how this builds mathematically, step by step. Step 1, you calculate the total remuneration before applying any exclusions at all. Step 2, sum up all those excludable amounts we talked about like HRA, conveyance, and employer provident fund. Step 3, compare that sum to the 50% threshold of the total. And step 4, if those exclusions breach that 50% mark, you calculate the excess, and that exact excess amount is legally deemed as remuneration and forcefully added right back into the wage definition. Okay, Section 5, Provisos and In-Kind Benefits, Equal Pay and Allowances. So there's a second proviso here that introduces a really fascinating rule. For the specific purposes of ensuring equal wages across all genders and computing the actual payment of wages, normally excluded items like HRA, conveyance, and overtime, they must actually be taken into computation. This is huge because it ensures a fair comparison and prevents wage discrimination from hiding behind cleverly structured allowances. Now you might be wondering, what about non-cash benefits? Well, when an employee is given remuneration in kind instead of cash, think of things like rent-free accommodation or maybe food coupons. The value is deemed part of wages, but only up to 15% of their total payable wages. The nuance here is actually very strict. It only applies when the benefit is given in lieu of cash. Plus, it absolutely must be based on a fair market value. And here is the major compliance risk you need to watch out for. Any excess above that 15% ceiling requires entirely separate treatment. It's a really precise calculation designed specifically to keep in-kind benefits from totally skewing the core, cash-based wage metrics. Finally, Section 6, Total Wage Classification Summary, Practical Implementation. All right, let's summarize our entire journey today. You've got your direct inclusions like basic and DA that form the foundation. Those are always in. Then you have your conditional exclusions like HRA and Provident Fund that can stay out, but only subject to that strict 50% test we just walked through. And finally, you have the deemed inclusions. That means that excess allowance spillover or the in-kind benefits up to 15% that get forcefully added back into the final wage calculation. Which really leads us to a highly critical takeaway. Given the sheer dynamic complexity of all these provisos, the real question you need to go ask your audit and tech teams today is this. Is your payroll software currently configured to automatically catch and calculate that 50% threshold excess for every employee every single month? Because let me tell you, if your organization is relying on manual human calculation for this constantly shifting target, your systemic risk is just immense. Take this knowledge back to your teams, verify your configurations, and make sure your systems are bulletproof. Thanks so much for joining me for this explainer, and keep learning. अक्सर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। बिल्कुल। मतलब अगर हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो सफेद टेढ़ी रेखा बिल्कुल साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस इशारा करके कह देता है कि भाई देखिए ये रहा फ्रैक्चर। वहाँ कोई बहस नहीं होती है ना, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, एकदम बाइनरी। सही कहा। वहाँ चीजें बहुत स्पष्ट और अलग अलग हिस्सों में बटी होती हैं और इंसानी दिमाग को ना ये स्पष्टता बहुत सुकून देती है। हाँ, लेकिन यही स्पष्टता तब बिल्कुल गायब हो जाती है जब हम कॉर्पोरेट पेरोल और श्रम कानूनों की दुनिया में कदम रखते हैं। ओह, वहाँ तो तस्वीर बहुत ही धुंधली है। वही तो, हर महीने के अंत में लाखों करोड़ों लोगों के इनबॉक्स में एक सैलरी स्लिप आती है। हम उस पर लिखे नंबर देखते हैं, खुश होते हैं या दुखी होते हैं, लेकिन अगर उस स्लिप को एक कानूनी एक्सरे मशीन में डाला जाए ना, तो अचानक वो साफ तस्वीर बहुत धुंधली हो जाती है।
मतलब कौन सा हिस्सा असल में वेतन है और कौन सा सिर्फ एक छलावा, ये समझना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं लगती। बिल्कुल। कानूनी नजरिए से देखें तो ये कॉर्पोरेट दुनिया का सबसे ज्यादा उलझावा क्षेत्र है। लोगों को लगता है कि जो पैसा बैंक खाते में आ गया बस वो सब वेतन है, लेकिन कानून ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। एकदम सही, कानून की नजर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए आज के इस डीप डाइव में हम इसी धुंधलके को साफ करने वाले हैं। आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। ये कोई आम पब्लिक आर्टिकल नहीं है, बल्कि ये वे आंतरिक 100% कानूनी रूप से प्रमाणित प्रेजेंटेशंस और दस्तावेज हैं जिन्हें टॉप एचआर, फाइनेंस और लीगल टीम्स इस्तेमाल करती हैं। हाँ, और इनका मुख्य मकसद होता है कंपनियों को भारी ऑडिट और पेनाल्टी से बचाना। बिल्कुल। तो हम इन कानूनी ब्लूप्रिंट्स का इस्तेमाल करके आज ये डिकोड करेंगे कि किसी भी सीटीसी के, मतलब कॉस्ट टू कंपनी के भीतर कानून की नजर में असली वेतन आखिर है क्या। क्योंकि अगर इसका क्लासिफिकेशन गलत हुआ तो पूरी पेरोल प्रणाली ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। और मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी, ये सिर्फ एचआर विभाग का सिरदर्द नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का मुद्दा है जो या तो किसी को काम पर रख रहा है या खुद कहीं काम कर रहा है। बिना सही समझ के आप कभी भी जीरो डिफॉल्ट कंप्लायंस तक नहीं पहुंच सकते। तो चलिए उस कानूनी एक्सरे मशीन को चालू करते हैं। शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। इन दस्तावेजों के मुताबिक जो नया कोड ऑन वेजेस आया है 2019 का, उसका सेक्शन 2Y वो वेतन की नींव को कैसे परिभाषित करता है? देखिए, अगर हम कानूनी भाषा के जाल से थोड़ा बाहर निकलकर सीधे बात करें तो कानून कहता है कि वेतन का मतलब हर वो पारिश्रमिक है जिसे पैसे में मापा जा सकता है। पैसे में मापा जा सकता है। हाँ, ये वो पैसा है जो रोजगार की शर्तें पूरी करने पर कर्मचारी का कानूनी हक बन जाता है। इस कोड ने स्पष्ट रूप से सिर्फ 3 चीजों को इस वेतन के कोर यानी मुख्य हिस्से में रखा है। अच्छा, सिर्फ 3 चीजें? जी। पहला है आपका बेसिक पे या बुनियादी वेतन, दूसरा है महंगाई भत्ता जिसे हम डीए कहते हैं, और तीसरा है रिटेनिंग अलाउंस। ये रिटेनिंग अलाउंस क्या होता है? ये तब दिया जाता है जब कंपनी के पास काम कम हो लेकिन वो अपने कुशल कर्मचारियों को खोना नहीं चाहती, तो उन्हें रोके रखने के लिए जो पैसा देती है वो रिटेनिंग अलाउंस है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बेसिक पे एक तरह से किसी इमारत की नींव है? मतलब अगर आप उस कंक्रीट की नींव से छेड़छाड़ करेंगे तो उसके ऊपर जो पीएफ और ग्रेच्युटी की मंजिलें बनी हैं वो सब गिर जाएंगी। ये एकदम सटीक एनालॉजी है। बेसिक पे ही वो आधार है जिस पर भविष्य के सारे लाभ टिके होते हैं, और जो डीए है वो उस नींव को महंगाई की मार से बचाता है। कानून ये तय करता है कि ये हिस्से हर हाल में बिना किसी अपवाद के वेतनी माने जाएंगे। लेकिन यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। कैसा गैप? देखिए, अगर बेसिक पे और डीए ही मुख्य वेतन है तो मेरी सैलरी स्लिप का बाकी 60% हिस्सा क्या है? मतलब उसमें तो दुनिया भर के भत्ते और अलाउंस लिखे होते हैं। क्या वे कानून की नजर में अदृश्य हैं? अदृश्य नहीं है, लेकिन कानून उन्हें एक बिल्कुल अलग चश्मे से देखता है। इन कानूनी दस्तावेजों में एक पूरी लंबी सूची दी गई है जो ये बताती है कि क्या वेतन नहीं है। अच्छा। हाँ, और ये सूची काफी हैरान करने वाली है। हैरान करने वाली इसलिए क्योंकि इसमें ऐसी चीजें शामिल है जिन्हें हम आमतौर पर अपनी असली कमाई मानते हैं, है ना? जैसे मैंने देखा इन दस्तावेजों में मकान किराया भत्ता यानी एचआरए वेतन नहीं है। बिल्कुल। यात्रा भत्ता या कन्वीनियंस अलाउंस वेतन नहीं है। कंपनी जो पीएफ या पेंशन में योगदान दे रही है वो भी वेतन नहीं है जी। यहां तक कि ओवर टाइम, वैधानिक बोनस, ग्रेच्युटी और सुविधाएं जैसे मुफ्त घर या मेडिकल, इन सब को कानून वेतन मानने से साफ इनकार कर देता है। और यहीं पे लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। रुको एक सेकंड, यहां मुझे एक बात गले नहीं उतर रही है। बताइए। अगर कोई कंपनी मुझे हर महीने एचआरए के नाम पर 20,000 रुपए दे रही है और कन्वेंस के नाम पर 5,000 दे रही है, वो पूरा 25,000 हर महीने सीधे मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो भाई कैश तो कैश है ना? मैं उस पैसे से किराने का सामान खरीद सकता हूँ, बिल भर सकता हूँ, तो कानूनी से वेतन क्यों नहीं मान रहा? बहुत ही वाजिब सवाल है। इसका कारण ये है कि कानून पारिश्रमिक और भरपाई के बीच, मतलब रेम्यूनरेशन और रीइंबर्समेंट के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी रेखा खींचता है। ओके, थोड़ा से विस्तार से समझाइए। इसे ऐसे समझिए, पारिश्रमिक यानी रेम्यूनरेशन वो कीमत है जो आपके समय, आपके दिमाग और आपके कौशल के लिए दी जाती है। ये आपका बेसिक पे है जो आपके काम का इनाम है। ठीक है।
लेकिन भरपाई यानी रीइंबर्समेंट का मतलब है कि आपके रोजगार की वजह से आप पर जो अतिरिक्त खर्च आ रहा है, कंपनी बस उसकी भरपाई कर रही है। अच्छा, तो मतलब कंपनी ये कह रही है कि आप हमारे लिए काम करने इस महंगे शहर में आए हैं, इसलिए हम आपको किराए का पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल। या आपको रोज हमारे ऑफिस तक आना पड़ता है, इसलिए हम आपके पेट्रोल का खर्च उठा रहे हैं। ये भत्ते आपके वास्तविक काम का इनाम नहीं है। ओह, समझ गया। ये बस उस काम को करने की लागत को कम करने का एक तरीका है। इसीलिए एचआरए और यात्रा भत्ते को पेरोल सिस्टम कानूनी तौर पर वेतन से अलग रखता है। बाप रे, ये नजरिया तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। मतलब अगर हम इसी तर्क को आगे बढ़ाएं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि बोनस और ओवरटाइम भी वेतन नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बोनस कंपनी के मुनाफे में आपकी हिस्सेदारी है, आपके रोजमर्रा के काम की कीमत नहीं। सही कहा। और ओवरटाइम एक एक्स्ट्रा समय के लिए दिया गया अलग पैसा है। एकदम सटीक। और उसी तरह जो पैसा कंपनी आपके पीएफ में डाल रही है, वो भविष्य के लिए एक वैधानिक बचत है, आपके आज के काम का नकद इनाम नहीं। कानून इन सभी चीजों को अपवाद यानी एक्सक्लूजन मानता है। लेकिन अगर मैं किसी कंपनी का मालिक हूं और मुझे आज ये नियम पता चल जाए कि एचआरए, यात्रा भत्ता और पीएफ का पैसा वेतन नहीं है, तो मेरे दिमाग में तो एक बहुत ही खतरनाक विचार आएगा। कैसा विचार? मैं समझ सकती हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। टैक्स और पीएफ बचाने का लालच। मतलब मैं तो सीधा ये करूंगा कि अपने कर्मचारी की बेसिक पे को घटाकर सिर्फ 1,000 रुपए कर दूंगा और बाकी की पूरी सैलरी उसे एचआरए, स्पेशल अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस के नाम पर दे दूंगा। इससे क्या होगा, मुझे सिर्फ 1,000 रुपए के आधार पर उसका पीएफ और ग्रेच्युटी जमा करना पड़ेगा। मेरी कंपनी के तो लाखों रुपए बच जाएंगे। और आपको क्या लगता है, इतिहास में कंपनियों ने ऐसा नहीं किया होगा? जरूर किया होगा। एचआर और फाइनेंस विभागों ने इसी लूप होल का फायदा उठाकर पेरोल को अपनी मर्जी से घुमाया होगा। बिल्कुल, सालों तक ये चलता रहा। कंपनियों ने बेसिक पे को कृत्रिम रूप से बिल्कुल छोटा कर दिया और बाकी सारा पैसा स्पेशल अलाउंस नाम के एक बड़े से गुब्बारे में भर दिया। हाँ, ताकि हाथ में आने वाला कैश ज्यादा दिखे। जी, इससे कर्मचारियों का मौजूदा टेक होम कैश तो बढ़ गया, लेकिन उनके रिटायरमेंट फंड और सामाजिक सुरक्षा की पूरी तरह से धज्जियां उड़ गई। ओह, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है लंबी अवधि में। और इसी चालाकी को रोकने के लिए इस नए कानून ने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र निकाला है। ओहो, ब्रह्मास्त्र। तो क्या अब कानून ने कंपनियों के इस खेल पर लगाम लगा दी है? बिल्कुल लगा दी है। और इस ब्रह्मास्त्र को 50% का नियम या फर्स्ट प्रोवाइजो कहते हैं। ये पूरे वेज कोड का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। तो ये 50% का नियम काम कैसे करता है? मान लीजिए कोई कंपनी अभी भी वही चालाकी करने की कोशिश कर रही है, तो कानून उसे कैसे पकड़ेगा? कानून बहुत ही सीधे तरीके से कहता है कि ठीक है, हम मानते हैं कि एचआरए, यात्रा भत्ता और पीएफ योगदान वेतन नहीं है। ठीक है। आप इन्हें अपवाद में डाल सकते हैं, लेकिन इन सभी अपवादों का कुल योग आपके पूरे सीटीसी या कुल पारिश्रमिक के 50% हिस्से से ज्यादा नहीं हो सकता। यहाँ मामला सच में बहुत रोचक हो जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि हवा में बात करने से ये गणित शायद समझ नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल। मान लेते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका महीने का कुल पारिश्रमिक मतलब सीटीसी 1 लाख रुपए है। ठीक है, 1 लाख रुपए मान लेते हैं। अब कंपनी सोचती है कि हम इसका बेसिक और डीए सिर्फ 30,000 रखते हैं और बाकी का जो 70,000 रुपए है हम इसे एचआरए, ट्रैवल अलाउंस और स्पेशल अलाउंस के नाम पर दे देंगे, ताकि हमें सिर्फ 30,000 पर पीएफ देना पड़े। तो अब ये नया 50% का नियम इस स्थिति में क्या करेगा? देखिए, कानून सबसे पहले उस 1 लाख रुपए का 50% निकालेगा, जो होता है 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000। नियम के मुताबिक आपके सारे अपवादों और भत्तों की अधिकतम सीमा इसी 50,000 तक हो सकती है। लेकिन आपके उदाहरण में कंपनी ने भत्ते कितने दिए हैं? 70,000 रुपए दिए हैं। तो ये 70,000 उस 50,000 की कानूनी सीमा से कितना ज्यादा है? 20,000 रुपए ज्यादा है। बस यहीं पर कानून अपना हथौड़ा मारता है। कानून कहता है कि ये जो अतिरिक्त 20,000 रुपए है ना, इसे अब हम भत्ता या अपवाद नहीं मानेंगे। हम इस 20,000 को खींचकर वापस बुनियादी वेतन में जोड़ देंगे। गजब। मतलब अब कंपनी को बेसिक पे 30,000 और इस अतिरिक्त 20,000 को मिलाकर कुल 50,000 रुपए पर पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना करनी पड़ेगी। बिल्कुल। कंपनी का कोई पैसा नहीं बचा, उल्टा वो कानूनी पचड़े में फंस गई। वाह, इस नियम ने तो कंपनियों के पास से वो आजादी ही छीन ली जिसके तहत वे अपनी मर्जी से सैलरी स्ट्रक्चर बनाते थे। जी, अब आप वेतन को छोटे छोटे भत्तों में तोड़कर अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते।
जीरो एस्केप। ये तो बहुत ही शानदार तरीका इस लूप होल को बंद करने का। जी। तो अब हमारे पास एक साफ तस्वीर है। बेसिक और डीए वेतन है, भत्ते और सुविधाएं वेतन नहीं है। और अगर भत्ते 50% से ज्यादा हुए तो अतिरिक्त पैसा वापस वेतन बन जाएगा। लेकिन मुझे इन दस्तावेजों में कुछ और भी दिख रहा है। कुछ ऐसी अजीब स्थितियां हैं जहां नियम फिर पलट जाते हैं। अच्छा, आप कानून के सेकंड प्रोवाइजो या अपवादों के अपवाद की बात कर रहे हैं? हाँ, क्या ऐसा भी होता है कि जो चीजें कानून की नजर में वेतन नहीं है वो किसी खास परिस्थिति में अचानक से वेतन मान ली जाती हैं? बिल्कुल होता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर जब बात समानता और अधिकारों की हो। समानता मतलब जेंडर इक्वालिटी। हाँ, कानून कहता है कि जब हमें ये जांचना हो कि कार्यस्थल पर पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिल रहा है या नहीं, तब हम भत्तों को बाहर नहीं रखेंगे। मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। मतलब अगर कोई कंपनी एक पुरुष और एक महिला दोनों को 40,000 रुपए बेसिक पे दे रही है, तो कागजों पर तो वेतन समान दिख रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन कंपनी चुपके से पुरुष कर्मचारी को 15,000 रुपए का अतिरिक्त एचआरए या कन्वेंस दे रही है जो महिला को नहीं मिल रहा। तो कंपनी ये तक दे सकती है कि अरे हम तो बेसिक वेतन समान दे रहे हैं, एचआरए तो वेतन की परिभाषा से बाहर है, तो हमने कोई भेदभाव नहीं किया। एकदम सही। और इसी कुतर्क को तोड़ने के लिए कानून कहता है कि जब जेंडर इक्वालिटी की जांच होगी तब एचआरए और यात्रा भत्ता जैसे अपवादों को भी वेतन का हिस्सा माना जाएगा। क्या बात है। तब देखा जाएगा कि कुल कितना पैसा मिल रहा है। ये सिर्फ कागजी नियम नहीं है, ये कार्यस्थल पर एक बहुत गहरी असमानता को खत्म करने का औजार है। ये जानकर सच में बहुत अच्छा लगा कि कानून ने इस बारीकी को समझा है। जी। और एक और चीज जो कॉर्पोरेट दुनिया में बहुत आम है वो है भत्तों के बदले सुविधाएं देना, जिसे इन दस्तावेजों में इन काइंड बेनिफिट्स कहा गया है। हाँ, रेम्यूनरेशन इन काइंड। मान लीजिए कोई स्टार्टअप है, वो अपने कर्मचारियों से कहता है कि हम तुम्हें कैश तो कम देंगे लेकिन तुम्हें ऑफिस आने के लिए फ्री कार मिलेगी, खाने के लिए अनलिमिटेड फूड कूपन मिलेंगे और रहने के लिए फ्री फ्लैट मिलेगा। क्या इस पर भी कोई लगाम है? बिल्कुल है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और कानून समझता है कि अगर वो चुप रहा तो कल को कंपनियां लोगों को पैसे देने के बजाय सिर्फ राशन और कूपन में भुगतान करने लगेंगी। इसीलिए 15% का नियम बनाया गया है। ये 15% का नियम क्या है? अगर कोई कंपनी नकद के बदले वस्तु या सुविधाएं देती है तो कानून सबसे पहले उस सुविधा का बाजार मूल्य निकालता है। ठीक है। अगर उन सारी सुविधाओं का मूल्य आपके कुल देय वेतन के 15% से कम है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सुविधाओं का मूल्य 15% की सीमा को पार कर जाता है तो उस अतिरिक्त मूल्य को भी कानूनी तौर पर वेतन का हिस्सा मान लिया जाएगा। ओह, इसका सीधा सा मतलब है कि आप कर्मचारी को सिर्फ सुख सुविधाएं देकर उसके न्यूनतम नकद वेतन और पीएफ के अधिकारों को नहीं मार सकते। बिल्कुल। आप उसे फूड कूपन दे सकते हैं, लेकिन उसका रिटायरमेंट सुरक्षित करने के लिए आपको नकद बेसिक पे पर पीएफ देना ही होगा। तो हमने थ्योरी तो बहुत गहराई से समझ ली। अब इन दस्तावेजों के आखिरी हिस्से पर आते हैं जो सीधे तौर पर ऑडिट चेकलिस्ट के बारे में है। असल दुनिया में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जहां ये सारे एचआर और पेरोल सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, वहां कंपनियां सबसे बड़ी गलतियां कहां कर रही हैं? देखिए, ऑडिट चेकलिस्ट के हिसाब से सबसे बड़ी गलती सिर्फ एक है, चीजों का सिर्फ नाम बदल देना बिना उसकी प्रकृति समझे। इसे हम मैकेनिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। मतलब अगर मैंने सीटीसी में किसी चीज का नाम यूनिफॉर्म अलाउंस या स्पेशल ट्रैवल अलाउंस रख दिया तो कंपनी मान लेती है कि ये तो अपवाद है, इस पर पीएफ नहीं देना। हाँ, और जब ऑडिटर आता है तो वो पूछता है कि भाई आपका कर्मचारी तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है पिछले 2 साल से, तो फिर ये ट्रैवल अलाउंस किस बात का? अरे बाप रे। और ये हर महीने एक फिक्स अमाउंट क्यों है? अगर ये एक्चुअल खर्चा है तो हर महीने बिल अलग अलग होना चाहिए ना? तब तो कंपनी के पास कोई जवाब नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं होता। ऑडिटर ये देखते हैं कि भत्ते का सिर्फ नाम क्या है ये मायने नहीं रखता, उसकी असल प्रकृति यानी नेचर क्या है ये मायने रखता है। क्या वो सच में किसी खर्च की भरपाई कर रहा है? अगर वो सिर्फ सैलरी का एक हिस्सा है जो फिक्स रूप से हर महीने दिया जा रहा है और उसका काम से कोई सीधा संबंध नहीं है, तो ऑडिटर उस पूरे स्पेशल अलाउंस को उठा के सीधे बेसिक वेतन में जोड़ देते हैं। और फिर सालों की पेनल्टी, ब्याज और कानूनी मुकदमों का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। बिल्कुल, जो किसी भी कंपनी को दिवालिया कर सकता है। तो मतलब फाइनेंस और एचआर टीमों को अपने पेरोल सॉफ्टवेयर को सिर्फ कॉपी पेस्ट करके नहीं चलाना है, उन्हें हर भत्ते की प्रकृति का एक्सरे करना ही होगा।
जी, ये अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। ये रिस्क मिटिगेशन और अनुपालन की एक सख्त जरूरत है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। वेतन अब सिर्फ एचआर और कर्मचारी के बीच मोलभाव का कोई टूल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सख्त कानूनी ढांचा है। वो जमाना चला गया जब आप एक एक्सेल शीट खोलते थे और सीटीसी के नंबरों को अपनी मर्जी से इधर-उधर खिसकाकर टैक्स और पीएफ बचा लेते थे। सही कहा आपने। आज के कोड ने हर एक रुपए की जगह और उसकी प्रकृति को बहुत बारीकी से फिक्स कर दिया है। और ऐसा करके उसने वास्तव में दोनों पक्षों के लिए नियम स्पष्ट कर दिए हैं, जिससे विवाद कम हो। बिल्कुल। हमने देखा कि बेसिक क्या हैं, भत्ते क्यों अलग हैं, 50% का ब्रह्मास्त्र कैसे काम करता है और समानता के लिए नियम कैसे पलट जाते हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है जो इन ऑडिट चेकलिस्ट और दस्तावेजों से भी आगे की बात है। बताइए, क्या ख्याल है? आज का ये जो कानून है जिसने 50% के टेस्ट और बेसिक पे को इतनी खूबसूरती से बांधा है, ये उन पारंपरिक नौकरियों के लिए है ना, जहां एक फिक्स ऑफिस है, एक फिक्स बॉस है और एक एम्प्लॉयर है। जी, ये पूरी तरह से इंडस्ट्रियल और पारंपरिक कॉर्पोरेट ढांचे के लिए बना है। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, वो दिन दूर नहीं जब गिग इकोनॉमी, फ्रीलांसिंग और कॉन्ट्रैक्ट वर्क पूरी दुनिया पर हावी हो जाएंगे। ये तो हो ही रहा है। हाँ, तो एक ऐसा भविष्य जहां शायद कोई सीटीसी नाम की चीज ही ना हो, न कोई फिक्स बेसिक पे होगा, न कोई एचआरए, न कोई ट्रैवल अलाउंस। लोग बस एक प्रोजेक्ट पूरा करेंगे या एक टास्क करेंगे और उसका एक मुश्त पैसा लेंगे। बिल्कुल। जब काम का ये पूरा ढांचा ही बदल जाएगा, तब ये 50% का नियम और बेसिक बनाम भत्ते की ये जो इतनी बड़ी बहस है, ये कैसे काम करेगी? क्या भविष्य की इस नई काम करने की शैली के लिए हमें फिर से एक नया एक्सरे मशीन बनाना पड़ेगा और इन कानूनों को जीरो से लिखना होगा? ये बहुत ही शानदार और जरूरी सवाल है। सच्चाई ये है कि श्रम कानून हमेशा तकनीक और काम करने के तरीकों से एक कदम पीछे चलते हैं। गिग इकोनॉमी ने नियोक्ता और कर्मचारी के उस पारंपरिक रिश्ते को ही खत्म कर दिया है जिस पर यह पूरा वेज कोड टिका है। बिल्कुल। जब बेसिक पे और भत्ते का बाइनरी ही गायब हो जाएगा तो ये 50% का नियम तो हवा में लटक जाएगा। ये श्रम कानूनों के लिए अगला सबसे बड़ा शून्य है जिससे दुनिया भर की सरकारें अभी जूझ रही हैं। वाकई एक समस्या सुलझती है तो भविष्य एक नई पहेली सामने रख देता है। यही तो एवोल्यूशन है। बिल्कुल। खैर, आज के लिए इतना ही। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने और सीटीसी के इस उलझे हुए एक्सरे को पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर एक नए और दिलचस्प विषय की गहराई में उतरेंगे। तब तक के लिए अलविदा। Imagine a senior executive pulling in a compensation package of like 5 million rupees a year. Right, which is a massive number. Oh yeah, absolutely massive. You picture the sprawling house, the luxury car, and just this undeniable financial security, right? Yeah, you definitely assume they're set for life. Exactly. Yeah. But now imagine a government auditor looking at that exact same executive's official pay slip, Okay. and they legally conclude that their actual wage, like the baseline number upon which all their legal rights and benefits are calculated, is only 8,000 rupees a month. Wow, just 8,000. Just 8,000. Yeah. And the crazy thing is that is not some hypothetical scenario. It's a documented reality. Yeah, it's actually incredibly common. Right. And for decades, there's been this massive, entirely legal corporate shell game. It's allowed companies across the globe to just radically shrink their statutory payroll obligations. And all while keeping those headline numbers looking huge, right? I mean, it's an incredible sleight of hand. It really is. Because when you're just looking at the bottom line hitting your bank account, you don't really realize that the architecture of that payment is designed to minimize the employer's liability. Right. You're just looking at the cash you get to spend. Exactly. But the way a paycheck is constructed isn't just some random accounting choice. It's a reflection of labor history and corporate lobbying and legislative countermeasures. Okay, let's unpack this, because that is exactly what we are dismantling today on this deep dive. I'm really looking forward to it. It's such a crucial topic. It really is. We're zeroing in on a meticulously detailed, entirely legally verified compliance presentation today. And it's centered entirely on Section 2 of the Code on Wages from 2019 in India. Right, the new framework. Yes. We're unpacking the exact legal definition of the word wages
And I know before you listening out there think this sounds like a dry seminar for HR professionals, let me assure you it is not. Oh, definitely not. It affects everyone. Exactly. The legal definition of a wage dictates the actual cash in your pocket. It dictates the size of your retirement fund. And honestly, it dictates whether your company is sitting on a ticking legal time bomb. Yeah, we are going to get into that bomb later. Yeah. But our mission today is to decode what gets included, what gets cleverly carved out, and how governments are literally trying to force transparency back into the system. Because the stakes here are, they're existential for modern businesses. How so? Well, the Code on Wages 2019 was implemented to consolidate and replace this really fragmented web of older labor laws. Right, there were dozens of them, right? Yeah, just a mess of overlapping rules. And Section 2 is the beating heart of this new framework. Okay. If a multinational corporation or even just a mid-sized enterprise gets this single definition wrong, they aren't just facing a minor accounting error. We're talking real consequences. Oh, massive. The source material outlines catastrophic risks. We're talking retroactive claims for unpaid benefits spanning years. Wow. Huge financial penalties and just paralyzing employee disputes. The compliance goal stated in the text is literally zero default. Zero default, meaning absolutely no room for error. Exactly, because anything less is just an open invitation for an audit disaster. Okay, so we have to start at the absolute bedrock here. If I'm hired to do a job, my assumption is that everything the company gives me is my wage. Right, that's the logical leap most people make. Yeah. I work, you pay me, that's my wage. Yeah. According to the baseline text of Section 2, how far off is my assumption? Well, your assumption is actually perfectly aligned with the starting premise of the law. Oh, really? Yeah, the legal text begins with this fascinatingly broad stroke. It defines wages as all remuneration. All remuneration. Yes. It explicitly says whether that is by way of salaries, allowances, or otherwise. Okay, so everything. Basically, yes. However, it immediately attaches two non-negotiable conditions to that. Of course there's a catch. What's the first one? First, the remuneration must be expressed in terms of money or be capable of being expressed in terms of money. Okay, that makes sense. That feels like a direct response to historical exploitation. You know? How do you mean? Like, you can't pay me in company script that I can only spend at the company store. And you can't pay me in grain or something. Well, right, exactly. It has to be liquid capital that I can actually use in the open market. Precisely. It secures the worker's economic agency. Okay, and what's the second condition? The second condition is that this money must be payable if the terms of employment, whether express or implied, are fulfilled. Ah, okay. Which separates a wage from a gift, essentially. Exactly. Like if a company has an amazing quarter and the CEO decides to randomly hand out a $1,000 bonus to everyone just to celebrate, that's not a wage, right? Right, because it wasn't promised in exchange for your specific labor. But if my contract says, hey, hit these sales metrics and you get $1,000, then it is a wage because I fulfilled the terms. Exactly right. What's fascinating here is that it is entirely about contractual fulfillment. The legal promise, essentially. Yes. The lawmakers wanted to remove the ambiguity that employers historically use to withhold pay. They can't just change the rules after the fact. No, they can't. And to anchor this really broad all-remuneration concept, the code explicitly establishes three core pillars. Okay, 3 pillars. What are they? These are universally, unquestionably included in the definition of a wage. The first is basic pay. Okay, that one's obvious. The second is dearness allowance, which is often referred to as DA. And the third is retaining allowance. Okay, let's break these down. Basic pay is pretty self-explanatory. Right. If basic pay is the concrete foundation of the house, then dearness allowance for our international listeners is essentially the weatherproofing against inflation. Right. That's a great way to put it, yes. It's a component tied to the cost of living index. It's designed to ensure that the purchasing power of your basic wage isn't just eroded by macroeconomic inflation over time. Exactly. It keeps the real value of your wage stable. But that third pillar requires some serious scrutiny. A retaining allowance. Yeah, it catches a lot of people off guard. I mean, if I'm being retained, it implies I'm not actively producing anything. Right, you're on standby, essentially. So what on earth is the retaining allowance? Is that just paying someone to not quit? Are companies legally required to treat money paid to someone to effectively just sit on a bench as a core wage? They absolutely are. And the reasoning is rooted deeply in the realities of industrial labor. Okay, give me an example. Consider a manufacturing plant, right? Right. One that relies on highly specialized seasonal supply chains. Okay. For 3 months of the year, they might have zero raw materials coming in.
Or imagine a factory facing a temporary operational halt due to a machinery refit. So the workers literally can't do their jobs? Right. The employer faces a dilemma. They can fire everyone, which means losing all that trained talent and facing immense rehiring costs later on. Which is a nightmare for HR. Exactly. Or they can pay a retaining allowance to keep the workers economically viable, securing their exclusive availability for when operations resume. Ah, I see. So it's like an economic tether. That's exactly what it is. You are paying for their availability, not their immediate output. Yeah. But I could totally see companies arguing like, hey, they aren't working right now. We're doing them a favor by paying them anything at all. Oh, they definitely made that argument. They'd say, don't tax this or force us to pay statutory benefits on it because it's essentially charity. And that is exactly what they used to argue for decades. But the law now clearly states that if you are paying this allowance to maintain your workforce architecture, it is a wage. No exceptions. No exceptions. It formally recognizes that a worker's livelihood doesn't just go on pause because the factory floor is quiet. That is a really profound shift in how we view labor. Okay, so the foundation seems incredibly solid. All remuneration based on contractual fulfillment, anchored by basic pay inflation protection and retention. It's a very strong baseline. But here's the thing. If this foundation is so robust, why does it look nothing like reality? I mean, if you ask anyone listening to pull up their latest digital payslip, they aren't going to see just 3 neat lines. No, they definitely won't. They're going to see a convoluted 15-item breakdown. They'll see a tiny basic pay, and then this massive cascade of things like house rent allowance, conveyance allowance, special allowance, medical allowance. Right, the whole list. If the law is so strict about all remuneration, how did the modern payslip turn into such an impenetrable alphabet soup? It turned into an alphabet soup because of the strategic carve-outs built into the very same legal section. So the law contradicts itself. You are identifying the central tension in all labor law. It's the battle between a broad definition and specific exemptions. Right. Section 2, license just define what a wage is. It immediately provides a highly contested list of exclusions labeled from clause a tause applause. It just seems like a glaring contradiction. Yeah. The government builds this massive defensive wall defining wages and then immediately cuts a dozen holes in it. That's a fair critique. What exactly is slipping through these holes? Well, the list is extensive, and understanding why these exclusions exist is key to seeing how they were eventually weaponized. Okay, let's look at the heavy hitters. Sure. Clause A excludes any statutory bonus. Clause K excludes the employer's contribution to any pension or provident fund, along with the interest accrued. Okay, let me jump in on the Provident Fund real quick because that is a massive piece of the puzzle here. It absolutely is. For those unfamiliar, a Provident Fund is a mandatory state-backed retirement savings scheme. Both the employee and the employer are required by law to contribute a specific percentage. Often around 12%. Right. 12% of the worker's wage into this fund. So excluding the employer's contribution from the definition of the wage itself makes logical sense. Yes, it prevents a recursive math problem. Exactly. Otherwise, you'd be calculating a percentage on top of a percentage in an endless, infinite loop. That is correct. The exclusion was designed for pure mathematical sanity. Okay, what else is excluded? Similarly, Clause excludes conveyance or travel allowances. Clause F explicitly excludes house rent allowance or HRA. HRA is a big one. Huge. Clause H excludes overtime allowance. Clause I excludes commission. And clauses J and K exclude end-of-service benefits like gratuity payable on termination or retirement benefits. Okay, I mean, the stated intent for some of these makes sense on paper. They all had good intentions originally. Right, like the government initially carved out things like house rent allowance to encourage urbanization. Exactly. They wanted to incentivize companies to help workers move to emerging industrial cities without penalizing those companies with higher payroll taxes on those specific stipends. Which is sound economic policy in a vacuum. But wait, so if my employer pays my rent, gives me a travel stipend, and matches my pension fund, Yeah. absolutely none of that counts as my wage for calculating things like my minimum wage or bonus. Under the old system, yes, none of it counted. Isn't that just a massive loophole for companies to shrink the size of the wage pie? I mean, the moment you tie a major financial obligation, like that 12% Provident Fund contribution, to the definition of a wage, while simultaneously allowing all these exclusions, you are practically begging corporate accountants to game the system. Begging is an understatement. It literally became the standard operating procedure across entire industries. Wow.
The history of compensation structuring is effectively the history of exploiting these specific clauses. Because if I am an employer and the law tells me I have to contribute 12% of my employee's wage to their retirement fund, my immediate financial imperative is to make that word wage mean the smallest amount of money legally possible. Exactly. You want to shrink the taxable base. Let's look at an example. Let's say you want to pay an employee a total of $100,000 a month. Okay, simple, round number. If you classify all $100,000 as basic, pay your 12% statutory contribution is $12,000. That's a significant cash outflow for the business. But what if you shrink the basic pay down to just $20,000? Then your 12% contribution is only $2,400. Exactly. You just saved almost $10,000 a month on one employee. But I still have to pay the employee the other $80,000 to hit their agreed total package. So where does it go? It goes straight into the alphabet soup. I see. The company takes that $80,000 and labels it house rent allowance, conveyance allowance, and the most notorious catch-all of them all, special allowance. Special allowance. It just means nothing. Right. By simply changing the names on the spreadsheet, the company has legally avoided paying $9,600 a month into that worker's retirement fund. That is just staggering. I mean, over the course of a 30-year career with compound interest, that corporate accounting trick is literally draining millions from a worker's future retirement security. It adds up incredibly fast. It's not just a clever tax dodge. It is a systemic transfer of wealth away from labor. Yes, it severely undermines the Social Security net. And it creates this bizarre reality where an employee might get a promotion, see their overall compensation go up, but because the raise was entirely categorized as a special allowance, their actual legally protected wage didn't increase by a single cent. Which means their retirement contribution didn't increase either. This is exactly the crisis that the authors of the Code on Wages 2019 were facing. They had to stop the bleeding. They knew that simply defining wages and creating a list of well-intentioned exclusions just wasn't working anymore. Because the accountants were too smart. Creative accountants will always find a way to stuff the vast majority of the compensation into those exclusion holes. If you ban one allowance, they will literally just invent 3 new ones. Right. You can't play whack-a-mole with payroll labels. Exactly. The lawmakers needed a mechanism that didn't just chase individual allowance names, but fundamentally capped the entire strategy at its root. So if you can't ban the exclusions without destroying the legitimate uses for them, like actual travel reimbursement or genuine housing support, how do you stop a company from stuffing 80% of a salary into those categories? You have to build a mathematical boundary. You have to establish a weight limit. You have to look at the total pie and mandate that the exclusions can only take up a specific percentage. You have just deduced the exact mechanism of the first proviso. The 50% test. Yes. The legal text introduces what is functionally an excess exclusion rule. It is a mathematically rigid guardrail designed to neutralize decades of payroll manipulation in one single stroke. Wow. It's commonly referred to as the 50% test, and the source document treats it as the absolute linchpin of modern compliance. Okay, let's get into the weeds here. Walk me through the mechanics of this. How does an auditor actually apply this 50% test to a convoluted modern payslip? It's a step-by-step unmasking process. Okay, step 1. Step 1 requires the company to calculate the total remuneration. Meaning everything. Yes. This means stripping away all the fancy labels. You take every single amount payable to the employee if the terms of employment are fulfilled. Basic HRA, overtime special allowances, employer PF contributions, literally everything. You create one master number. Yeah. The true size of the pie. Yes, that's your baseline. Step 2, you go back to that list of specific exclusions we talked about earlier, clauses A through I. Okay. You sum up all the amounts the company is trying to claim as legally excluded from wages. Let's call this the excludable sum. Okay, so I have the total size of the pie and I have the size of the slice the company's trying to hide from the wage definition. Right. The next step has to be weighing them against each other. Exactly. Step 3 is the threshold test. You take that excludable sum and compare it to the total remuneration. Okay. The law states that if the total of those specific excluded items exceeds 50% of the total remuneration, an automatic legal mechanism is triggered. And what happens to the excess? Because if a company has 80% of the compensation sitting in exclusions, there's a massive 30% overflow past that halfway mark. Step 4 is where the hammer falls.
Whatever monetary amount exceeds that 50% threshold is legally deemed to be remuneration and is forcefully added back to the wage base. Okay, so it's like a financial seesaw. That's a perfect visual. You have legally protected wages on one side and excluded allowances on the other. A company can pile as many fancy-sounding allowances as they want onto that right side, trying to tip the scale to avoid statutory payouts. Right. They just kept stacking them. But the absolute second that right side tips past 50% of the total weight the law intervenes, grabs the excess weight, and slams it right back onto the wage side of the scale. That is a perfect visualization. And the source provides a highly specific mathematical breakdown to show exactly how devastating this is to old payroll models. Let's run the numbers. I want to see this in action. Let's do it. Imagine an employee whose total remuneration is $51,600. Okay, total pie is $51,600. Got it. Now let's look at the structure the company built to try and hide as much of that as possible. The alphabet soup. Right. They have an HRA of $12,000. Okay, $12,000. A conveyance allowance of $3,000. Got it. The employer contributes $3,600 to the Provident Fund. Okay. And they have a massive, ambiguous block labeled special allowance totaling $18,000. Okay, let me do the math here. HRA is $12,000 plus conveyance is $3,000. That's $15,000. Plus employer PF is $3,600. So $18,600 plus the special allowance of $18,000. What's the total? That is a total excludable sum of $36,600. Correct. Now, apply the test. What is 50% of the total $51,600? Half of $51,600 is $25,800. So the legal threshold, the absolute maximum they can exclude is $25,800, but the company is trying to exclude $36,600. They're way over the limit. Yes. Let's see, $36,600 minus the $25,800 threshold gives us an excess of $10,800. Exactly. And this is the magic of the law. Yeah. Under the old regime, the company would pat themselves on the back for legally shrinking the wage base. I didn't think they were geniuses. But under the first proviso of the new code, that excess $10,800 is instantly, irrevocably reclassified as a wage. It just gets slammed onto the other side of the seesaw. It is added back to whatever meager basic pay they had originally set up. Wow. If we connect this to the bigger picture for compliance purposes, the final wage base for this employee can never be less than that 50% mark of $25,800. It completely neutralizes the accounting trick. Completely. But wait, let me play devil's advocate here for a second. Go ahead. If you force companies to recognize a massive chunk of money as a wage, which suddenly forces them to pay much higher statutory contributions to things like the Provident Fund, won't they just lower the employee's overall compensation to make up the difference? That's the immediate fear. Right, because if the company only budgeted $51,600 total for that role, and suddenly their tax burden goes up by a few thousand, they aren't going to just eat that cost out of the goodness of their hearts. No, they usually don't. They're going to lower the total pie. Doesn't this supposedly protective law actually risk hurting the workers' take-home pay in the short term? That is a very sophisticated critique, and it is the exact fear many industry analysts raised when the code was published. Did it happen? In the short term, for some companies with really tight margins, the restructuring to comply with the 50% rule did cause friction regarding take-home pay versus gross compensation. Because the total cost to company remained frozen. Right. Because you're right, if the employer has to put more money into the retirement fund, the immediate cash in hand for the employee might dip. However, the legislative view is decidedly long-term. They are essentially forcing workers to save for retirement, whether the worker wants to or not, by closing the corporate loophole. Yes, exactly. The government is stating that long-term Social Security and accurate minimum wage calculations take precedence over maximizing short-term liquidity through accounting loopholes. Which is tough, but understandable. Furthermore, market forces act as a counterbalance here. How so? If a company tries to slash overall compensation to offset their new statutory burdens, they will quickly lose their best talent to competitors who offer a compliant structure without reducing the total value of the package. The free market stepping in. Yeah. So the 50% rule effectively fixes the size of the wage pie. It guarantees that no matter how creative the accounting gets, half of the total compensation is always locked in as a protected wage. Yes, that's the guarantee. But solving the size of the pie doesn't solve everything, does it? Not at all. What if the total size of the pie is legally compliant,
but the way it's distributed between different employees is fundamentally discriminatory. Which brings us to one of the most elegant and honestly initially confusing mechanisms in the entire code. It's the second proviso. The source outlines this as the equal wages and payment of wages computation rule. Yeah, I have to say the reason this is confusing is that it feels like legislative whiplash. It really does read that way at first. I mean, we just spent all this time establishing that specific items like house rent allowance and conveyance allowance are legally excluded from the definition of a wage right, provided they stay under that 50% ceiling. Correct. But then the second proviso swoops in and declares that for two very specific scenarios, we are going to completely ignore our own rules and add those items back into the wage computation. It absolutely reads like doublespeak until you understand the specific societal loopholes it is designed to close. Okay, explain it to me. The law dictates that emoluments specified in clauses D, F, G, and H, which are conveyance allowance, house rent allowance remuneration under court awards, and overtime allowance, shall be taken into computation for two specific things: What are they? testing for equal wages across genders and verifying the actual payment of minimum wages. Okay, hold on. Let's break down the gender equity scenario, because I see how a company could use the exclusions to hide discrimination. It's unfortunately very common. Let's imagine a bank branch with two managers, one male, one female. Okay. They have the exact same title, the same responsibilities, the same tenure. To comply with basic anti-discrimination and equal pay laws, the HR department gives them both the exact same basic pay. Let's say $50,000 a month. On paper, their wages are identical. A surface-level audit would pass them with flying colors. Right. But behind closed doors, management decides they want to compensate the male manager significantly more. Which is illegal. Exactly. They can't increase his basic pay without increasing hers, or they trigger an obvious equal pay violation. So what do they do? So instead, they give the male manager a massive $40,000 a month conveyance allowance and a $30,000 a month house rent allowance. And they give the female manager absolutely nothing in those categories. Just zeroed out. Right, because those allowances are legally excluded from the standard definition of a wage. The company can just point to the ledger and say, look, their wages are the same. No discrimination here. That is the exact systemic abuse the second proviso destroys. It's so insidious. It really is. It acknowledges that when you allow certain forms of compensation to be hidden from the official wage definition, those hidden pockets become the easiest places to harbor discriminatory practices. The dark corners of the spreadsheet. Yes. The law mandates that when a labor inspector or a court is specifically auditing for gender pay equity, the employer loses the right to use those exclusions as a shield. The shield drops. The HRA, the travel stipends, the overtime, it all gets forcibly pulled back onto the table to calculate the true comparative wage. It is targeted transparency. It's the government basically saying, we will let you exclude rent stipends for your corporate tax accounting. But the absolute second we are verifying, if you treat your male and female employees equally, those numbers are going right back onto the scorecard. Exactly. And this logic applies equally to verifying the payment of minimum wages. So making sure someone isn't being starved, basically. Right. The government wants a holistic view of the employee's actual economic reality. If the state says a worker needs a certain amount of total value just to survive, they need to look at the housing and travel support actually provided to ensure the worker isn't being exploited below a livable threshold. That makes total sense. Yeah. Which naturally leads to the next frontier of this sort of cat and mouse game. Oh, there's always another move. Right. So if the government has now strictly regulated the basic wage, and they've clamped down on cash allowances with the 50% rule, and forced transparency on discriminatory stipends, what is the next logical move for a corporate accountant trying to minimize cash outflow? They stop paying in cash entirely. Exactly. The pivot to remuneration in kind. Yes, the perks. And we aren't just talking about a free t-shirt or some company swag here. No, we're talking substantial value. If a company owes me money, what stops them from saying, hey, instead of your last 20,000 rupees in cash here is a long-term lease on a company car, or a rent-free apartment in a company-owned building, or a lifetime supply of branded cafeteria vouchers. Which sounds great until you try to pay a bill with it. Right. Historically, we saw this with company towns, where workers were paid in scrip that was literally useless
outside the company's ecosystem. It's essentially a corporate barter system. And it is a system that strips the worker of all economic mobility. Totally. You cannot pay a hospital bill or your child's school fees with cafeteria vouchers. Exactly. To prevent this regression, the code includes an explanation section dealing explicitly with the limits of perks and amenities. Okay, so how tight is the limit? Because obviously some perks are great. Nobody is complaining about a free company lunch. The law acknowledges that providing amenities like food-subsidized canteens or accommodation can be legitimate. Okay, good. However, it institutes a strict 15% cap. 15% of what? The text states that if an employer provides benefits in kind in lieu of cash wages, meaning it is given to satisfy a portion of what is actually owed to the worker, the value of that remuneration in kind is deemed to be part of the wages, Okay. but only up to a maximum of 15% of the total wages payable. Okay, let's run a scenario here just to be sure I get it. My total wage is supposed to be $100,000. Okay. The company wants to give me a rent-free apartment instead of paying me my full cash amount. Under this rule, they can only count up to $15,000 worth of that apartment's value towards my $100,000 wage. That is correct. So if the apartment is actually worth $40,000 a month, what happens to the remaining $25,000? The excess $25,000 cannot be legally deemed as part of your wage for compliance purposes. It just doesn't count. Nope. The employer must still provide you with $85,000 in actual cash or allowable wage components to hit your $100,000 threshold. Wow, okay. They cannot over-leverage non-cash benefits to claim they are meeting minimum wage or statutory requirements. But this immediately raises a massive red flag for me regarding valuation. The valuation is the trickiest part. Who determines what that apartment or that company car or those food coupons are actually worth? That is the critical vulnerability. I mean, if I am a shady employer, I could give an employee a beat-up 10-year-old scooter and claim the value of utilizing this premier company vehicle is $15,000 a month, and thereby I'm legally stealing $15,000 in cash from their paycheck. Which is why the source material specifies that it must be based on fair market value or calculated as per specific government orders where applicable. Oh, so you can't just make up a number? No, you cannot artificially inflate the cost of a cheap perk. Okay, that's a relief. If an auditor investigates and finds you are claiming a $15,000 offset for a scooter that rents for $2,000 on the open market, you are in violation of wage laws, not just tax codes. They penalize you. Heavily. It ensures that if a worker is giving up cash liquidity, they are receiving actual equivalent tangible value in return. It is genuinely fascinating how every single clause in this code is like a direct counterattack to a specific historical corporate abuse. It's a very defensive piece of legislation. But understanding the theory of the law is one thing. The reality of the boardroom is another entirely. Oh, absolutely. Theory and practice are miles apart. The source presentation includes an entire section dedicated to industry problems and legally verified solutions. Yes, it does. When the auditors actually show up with their calculators and start running these 50% tests and 15% perk limits, what does the fallout look like for companies that have been playing the old shell game? The fallout is severe, and the presentation paints a very stark picture of how deeply entrenched these problems are. What's the biggest issue they flag? The most glaring persistent issue highlighted is the stubborn use of artificially low basic salaries, particularly for high-earning individuals. This goes right back to our opening scenario. The $5 million cost to company executive with an $8,000 basic pay. Exactly. Companies are clinging to these disproportionate structures. They are labeling millions as special allowance blindly. Just hoping nobody notices. Right. They are doing this without ever doing the legal legwork to prove that those allowances actually meet the specific, narrow criteria of clauses to up. Because classification isn't just about what you name the folder. You can't just slap the word overtime on a pile of money if the employee never works a single hour of overtime just to claim the exclusion. Precisely. If it doesn't walk and talk like genuine overtime or genuine travel reimbursement, an auditor will strip the label right off. And when they do, the entire house of cards collapses. let's talk about the scope of that collapse. What does a retroactive claim actually mean in this specific context? It means the legal risk is compounded over time. It's a nightmare for businesses. Because they look backwards. Yes. If a company has been misclassifying $50,000 a month of an employee's pay for 5 years, an auditor doesn't just say, fix it for next month.
Oh, no. They run the 50% test retroactively. They determined that the company should have been paying 12% Provident Fund contributions on that hidden $50,000 every single month for 5 years. Oh, wow. Let me do that math. So that's $6,000 a month over 60 months. That's 360,000 rupees in unpaid contributions for just one employee. Plus interest. Oh, man. Plus severe statutory penalties for noncompliance. Plus the fact that the employee's annual bonus, which is often calculated as a percentage of the wage, has also been underpaid for 5 years. That is brutal. Now multiply that by a workforce of 5,000 employees. You are looking at a financial liability that can literally bankrupt a company. Exactly. It is a ticking legal time bomb buried deep in the payroll software. So for the companies that actually want to survive this transition, what is the legally verified solution provided in the text? How do they defuse the bomb? The mandate is a total ground-up payroll reconfiguration. Start from scratch. Yes. The source instructs companies to proactively run the 50% test on every single employee in their system right now. Before the auditor gets there. Exactly. The recommended best practice to achieve the stated goal of zero default compliance is to maintain basic pay at a healthy 40 to 50% proportion of the total remuneration right from the start. Basically, stop playing games. Build the buffer into the system so you never accidentally tip the seesaw past the legal limit. Exactly. The presentation explicitly warns that if your basic pay is sitting below 30% of the total package, you should immediately obtain a legal opinion. Because you're already in the danger zone. Because you are almost certainly operating outside the bounds of the new code. This raises an important question. Wait, and I'm stealing your line. Go ahead. This leads to a massive behavioral question. Given how much money is at stake in those statutory contributions across millions of workers, do you think companies are actually going to proactively fix these systems? It's a tough call. Or are they going to keep their heads down and just hope they don't get audited? That is the multi-million-dollar question. Proactive compliance requires a short-term increase in labor costs, which shareholders generally despise. Right. They want to see the profits now. However, the legal architecture of the Code on Wages 2019 is designed to make the cost of getting caught exponentially higher than the cost of compliance. It's a massive stick. It leaves them very few places to hide. Okay, let's bring all of these threads together. What this meticulously detailed compliance document has shown us is that Section 2 is nothing less than a complete paradigm shift in how human labor is valued and protected. It really is a new era. It systematically dismantles the smoke and mirrors of traditional payroll accounting. Right. By establishing a broad foundational definition strictly gating the exclusions, deploying the brilliant 50% seesaw test, and capping non-cash barter the law, ensures that the word wage actually fulfills its primary purpose. Which is protecting the worker's long-term livelihood. Exactly. Rather than just serving as a tool to minimize the employer's tax burden. It is a profound modernization of labor law. It forces transparency, and it mandates that a significant mathematically protected portion of the value you generate is legally recognized and utilized as the basis for your security. So here is my direct call to action for you, the listener. Do not remain passive about the architecture of your own compensation. Absolutely do not. Go dig up your latest payslip or your employment contract. Look past the bottom line number hitting your bank account. Find your total remuneration. Yes, find the total pie. Then do the math. Add up all the excluded items, the HRA, the travel stipends, the special allowances. Run the 50% test on yourself. See if the scale tips. Exactly. See if your basic pay is hovering dangerously below that 30% mark. Your compensation structure dictates your future financial security, and understanding how it's classified is the first necessary step to defending it. It is an incredibly empowering exercise. Everyone should do it today. But as we wrap up this deep dive, I want to pivot from the math to a broader, arguably more complex philosophical question. Okay, hit me. Everything we have unpacked today, the basic, the retaining allowances, the 50% rule, the limits on perks, is built on a very specific assumption about how work actually happens. Right. It assumes a traditional structured employer-employee relationship. Yes. The classic 9-to-5 salaried model. Precisely. It is a highly strict, mathematically rigid framework designed to stop traditional corporate exploitation within a traditional corporate structure. Right. But the very nature of work is undergoing a seismic shift right now. You were talking about the gig economy. Yes. Think about an Uber driver, or a freelance graphic designer on Upwork, or a delivery writer for a food app.
The gig economy breaks every single rule we just talked about. Every single one. I mean, there is no basic pay because there is no salary. There is no retaining allowance because the app doesn't care if you don't log in for 3 months. Right. There are no structured allowances like HRA or conveyance because you are considered an independent contractor footing your own bills. Exactly. There is no employer in the traditional sense, only a platform algorithm. Wow, yeah. There are only task-based payouts, a fee for a service rendered. Just raw transactions. So the massive question facing lawmakers today is this: how does a meticulously crafted law like the Code on Wages, with its brilliant 50% test, survive in an ecosystem where none of the inputs even exist? You can't. I mean, if I am an Uber driver making 200 rupees for a ride, what is the 50% test even applying to? It applies to nothing. The entire 200 is just a raw payout. Are gig workers completely legally invisible to these protections? Currently, they exist in a massive gray area. Which is terrifying. Platforms argue that because gig workers control their own hours and accept individual tasks, they are not employees. Right. And therefore, concepts like wages, provident funds, and minimum statutory pay simply do not apply to them. They just opt out of the law, basically. They argue that applying these 20th century concepts to a 21st century platform would destroy the flexibility that makes the gig economy function in the first place. But wait, that sounds exactly like the same corporate lobbying that created the alphabet soup of allowances in the first place. It rhymes, doesn't it? It's just a new loophole. Instead of hiding the wage in a special allowance, the tech companies are hiding the wage by redefining the worker as a partner. Exactly. Semantics. If an algorithm dictates your payout, penalizes you for rejecting work, and controls your access to the customer, you aren't an independent business owner. You are an employee of the app. And that is the exact counter-argument being fought in courts worldwide right now. I bet. If the intent of Section 2 de Moria is to prevent the exploitation of human labor and secure a baseline of economic dignity, then the law cannot ignore the millions of people whose primary income is algorithmically generated. It has to adapt. The challenge is translation. How do you translate the protective intent of the 50% rule into a piece rate gig environment? Do we need to redefine remuneration entirely? Like, do we mandate that every algorithmically generated payout must inherently include a protected, untouchable micro percentage designated for statutory benefits? That is one proposed model, actually. Really? Yes. Some labor advocates argue for a gig wage definition, where a platform must calculate the average hourly yield of a driver, factoring in wait times and self-funded travel costs. And then what? And then guarantee that the net yield never falls below a statutory minimum. Oh, okay, that makes sense. Others argue for a portable benefit system where the platform pays a microtax on every transaction directly into a worker-controlled Social Security fund. Bypassing the need for a traditional basic pay structure entirely. Exactly. It just goes straight to the safety net. It really highlights that while the Code on Wages closed the loopholes of the past century, the battle for the future is really just beginning. It's an ongoing war. Will these 100-year-old concepts of labor protection become obsolete? Or will lawmakers find a way to rewrite the definition of a wage to protect the workers of tomorrow? It is a massive, unresolved question. But it proves that whether you are logging hours in a corporate skyscraper or taking gigs on an app, we all fundamentally expect that simple arithmetic. Effort in fair value out. That's the core of it all. It is never as clean as we want it to be, but as we've seen today, understanding the muddy waters of the law is the only way to ensure you don't drown in them. दैट डिबेट में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि कल से आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो कम होने वाली है, लेकिन आपका रिटायरमेंट फंड अचानक तेजी से बढ़ने लगेगा, तो क्या आप खुश होंगे या नाराज? आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द बात कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कोड ऑन वेजेस 2019 के सेक्शन 2Y के बारे में। बिल्कुल। और अगर आप किसी कंपनी के एचआर या पेरोल मैनेजर हैं तो आपके लिए सवाल यह है कि क्या आप हर महीने लेबर ऑडिट का एक नया दुस्वप्न झेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो बदलाव आ रहे हैं ना वो पेरोल सिस्टम की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, मुद्दा ये है कि सरकार ने वेजेस यानी वेतन की जो परिभाषा है उसे पूरी तरह से बदल दिया है, और आज हम नए लेबर कोड के टेक्स्ट का विश्लेषण कर रहे हैं, विशेष रूप से उस नए 50% नियम का, जिसने पूरे कॉर्पोरेट जगत में हलचल मचा दी है। हाँ, हलचल तो है। और मैं मानती हूँ कि ये नियम एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने का एक शानदार और बहुत जरूरी कदम है।
ये कंपनियों के उस पुराने खेल को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, जहां वो बेसिक पे को आर्टिफिशियली कम रखकर पीएफ और बोनस का पैसा बचाती थी। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मेरा तर्क ये है कि ये नया लीगल फ्रेमवर्क इतनी ज्यादा जटिलताओं और विरोधाभासों से भरा है कि एक ईमानदार कंपनी के लिए भी जीरो डिफॉल्ट कंप्लायंस मतलब बिना गलती किए नियम का पालन करना अब लगभग असंभव हो गया है। आप एम्प्लॉइज को बचाने चले थे, लेकिन आपने पूरे सिस्टम को ही कंफ्यूज कर दिया है। कंफ्यूजन नहीं, इसे क्लैरिटी कहते हैं। देखिए, चलिए पहले इस बात को समझते हैं कि आखिर इस नए कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी। पुराने समय में क्या होता था? मान लीजिए आपका कुल पैकेज या सीटीसी 50,000 रुपए है। ठीक है। कंपनियां जानबूझकर आपकी बेसिक पे को सिर्फ 8 या 10,000 रुपए रखती थीं। बाकी का सारा पैसा स्पेशल अलाउंस या एचआरए के नाम पर अलग-अलग बाल्टियों में डाल दिया जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि पीएफ, ईएसआई या ग्रेच्युटी जैसी देनदारियां सिर्फ बेसिक पे पर कैलकुलेट होती हैं। हाँ, ये तो सबको पता है। तो बेसिक पे जितना कम, कंपनी का खर्चा उतना कम, और नुकसान किसका? सीधे तौर पर एम्प्लॉय के रिटायरमेंट फंड का। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा कि ये लूपहोल मौजूद था, और हाँ, कुछ कंपनियां इसका फायदा उठा भी रही थीं। लेकिन आपने जो समाधान निकाला है ना। एक मिनट, मुझे पहले आम श्रोताओं को ये समझाने दीजिए कि नया 50% का नियम काम कैसे करता है। इमेजिन कीजिए कि आपकी सैलरी एक गुब्बारे की तरह है। जब कंपनी बेसिक पे वाले हिस्से से हवा निकालती है तो वो भत्तों में चली जाती है। बिल्कुल, वो अलाउंसेस वाले हिस्से में जाकर फूल जाता है। अब सरकार ने क्या किया है? नए कोड ऑन वेजेस ने इस गुब्बारे के भत्ते वाले हिस्से पर एक सख्त बॉक्स लगा दिया है। यही बॉक्स है 50% का नियम। आसान भाषा में, आपके जितने भी भत्ते या अलाउंसेस हैं, वे आपके कुल पारिश्रमिक के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर वे 50% से ज्यादा हुए तो सरकार उस एक्स्ट्रा अमाउंट को वापस खींचकर बेसिक पे में जोड़ देगी। कोई लूप होल नहीं, कोई चोरी नहीं। आपके इस सख्त बॉक्स वाले उदाहरण में ही सबसे बड़ी खामी छुपी है। मुझे तो ये एक वन साइज फिट्स ऑल जैसी भारी गलती लग रही है। गलती कैसे? ये तो सुरक्षा है। आप इसे एम्प्लॉय की सुरक्षा कह रही हैं, लेकिन जरा असल जिंदगी के उदाहरणों को देखिए। मुंबई या बेंगलोर जैसे शहरों में काम करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछिए, जिसका एचआरए ही उसकी सैलरी का 50 से 60% होता है। या फिर दिल्ली का वो फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, जिसका ट्रैवल और कन्वेयंस का खर्चा बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसे पूरा दिन फील्ड में रहना है। उनके खर्चे वास्तविक हैं, मैं मानती हूँ। बिल्कुल, उनका ये खर्चा वास्तविक है, कोई लूपहोल नहीं है। लेकिन आपका ये 50% का नियम अंधा है। वो ये नहीं देखता कि खर्चा जेन्युइन है या नहीं। अगर उन एम्प्लॉइज के जेन्युइन भत्ते 50% क्रॉस कर जाते हैं तो कंपनी को उस अतिरिक्त हिस्से को बेसिक मानना पड़ेगा और उस पर पीएफ चुकाना पड़ेगा, जो कि एम्प्लॉय के ही काम आएगा। पर नतीजा क्या होगा? कंपनी अपनी जेब से तो एक्स्ट्रा पैसा देगी नहीं, वो एम्प्लॉय का इन हैंड पैसा काट लेगी। ये नियम उस बीमारी का इलाज कर रहा है जो शायद उस विशिष्ट मरीज को है ही नहीं। आप ईमानदार कंपनियों और एम्प्लॉइज दोनों पर पेनल्टी लगा रही हैं। आप इसे पेनाल्टी कह रहे हैं, लेकिन अगर हम नए लेबर कोड के लीगल टेक्स्ट को गहराई से पढ़ें तो ये कानून डीमिंग फिक्शन के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, और ये बहुत जरूरी है। और आम श्रोताओं के लिए ये डीमिंग फिक्शन क्या भला है? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी क्लब का कोई बहुत सख्त बाउंसर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका इरादा क्या है या आपकी कहानी क्या है। अगर आप 50% की लाइन क्रॉस करते हैं तो सरकार ये मान लेती है, यानी डीम कर लेती है, कि आप सिस्टम के साथ हेरफेर कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी की कुल सैलरी 1 लाख रुपए है। कंपनी ने बेसिक रखा 20,000 और बाकी 80,000 अलग अलग अलाउंसेस में डाल दिए। अब 50% के नियम के हिसाब से मैक्सिमम अलाउंस 50,000 हो सकता है। लेकिन यहाँ 80,000 है। हाँ, तो जो एक्स्ट्रा 30,000 है, ये नया कानून रूपी बाउंसर उसे पकड़कर वापस वेतन की डेफिनेशन में डाल देगा। ये कंपनियों को स्पष्ट रूप से मजबूर करता है कि वे अपना सैलरी स्ट्रक्चर ठीक करें, बेसिक पे को कम से कम 50% रखें। थ्योरी में ये बाउंसर वाली कहानी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चलिए इसी एनालॉजी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपका ये बाउंसर एक दरवाजे पर तो बहुत सख्ती दिखाता है, लेकिन दूसरे दरवाजे पर खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि नियम क्या है, और यहीं से इस कानून का सबसे बड़ा फेलियर शुरू होता है। आप किस कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं?
नियम बहुत साफ हैं। मेरा मतलब है सेकंड प्रोवाइजो। अगर हम कोड की गाइडलाइंस देखें तो पहले कहा गया है कि एचआरए, कन्वेयंस और ओवरटाइम जैसे भत्तों को वेतन की परिभाषा से बाहर रखा गया है। यानी 50% कैलकुलेट करते समय आप इन्हें बाहर रखते हैं। ठीक है, पेरोल सॉफ्टवेयर ने इसे ऐसे ही कॉन्फ़िगर कर लिया कि भाई ये चीजें वेजेस नहीं हैं। हाँ, वो स्पष्ट एक्सक्लूजन्स हैं। इसमें कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि कानून उसी पन्ने पर आगे जाकर एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा कर देता है। सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि जब बात जेंडर पे इक्विटी की आएगी, यानी महिलाओं और पुरुषों के बीच समान काम के लिए समान वेतन की, तो जिन चीजों को आपने अभी-अभी बाहर किया था, जैसे एचआरए और कन्वेयंस, उन्हें वापस वेतन का हिस्सा मानना पड़ेगा। एक ही सैलरी कंपोनेंट, लेकिन उसके दो अलग-अलग नेचर। देखिए, ये एक सेकंड, मुझे पूरा करने दीजिए। आप एक ईआरपी सिस्टम डेवलपर या पेरोल मैनेजर की स्थिति की कल्पना कीजिए। सिस्टम डेटाबेस में एचआरए को वेजेस मार्क करना है या नहीं? उत्तर है हाँ भी और नहीं भी। ये ऑडिट का एक भयानक दुष्प्रभाव है। अगर एचआर टीम इसे एक जगह जोड़ना भूल गई तो कल उन पर महिलाओं को कम वेतन देने का लेबर कोर्ट में केस बन सकता है। मैं ये पूरी तरह से मानती हूँ कि पेरोल मैनेजर्स के लिए ये एक लॉजिकल पजल है। उन्हें अपने सिस्टम्स को नए तरीके से मैप करना होगा। लेकिन क्या आप इसके पीछे के वास्तविक कारण को इग्नोर कर सकते हैं? कारण जो भी हो, सिस्टम तो टूट रहा है ना। आप पूछ रहे हैं कि ये विरोधाभास क्यों है? चलिए इतिहास में चलते हैं। बात सिस्टम उलझाने की नहीं है, बात उस लूप होल को बंद करने की है जिसे कंपनियां दशकों से इस्तेमाल कर रही थीं। कैसा लूप होल? पहले क्या होता था, एक पुरुष और एक महिला एक ही कंपनी में बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे हैं। कंपनी दोनों का बेसिक पे समान रखती थी, मान लीजिए 30,000 रुपए। अगर कोई ऑडिटर या लेबर इंस्पेक्टर आता तो कंपनी तुरंत दिखा देती कि देखिए बेसिक पे समान है, हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन पीछे के दरवाजे से कंपनी पुरुष कर्मचारी को ज्यादा कन्वेयंस अलाउंस या कोई खास स्पेशल अलाउंस दे देती थी। कागजों पर समानता, लेकिन असल में भेदभाव। तो क्या इसका समाधान पेरोल की पूरी डेफिनेशन को ही कॉम्प्लेक्स कर देना है? बिल्कुल, यही एकमात्र समाधान है। अगर सेकंड प्रोविजो में एचआरए और कन्वेयंस को जेंडर इक्वालिटी के लिए वापस नहीं जोड़ा जाता तो कंपनियां भत्तों के पीछे छिपकर वेतन में भेदभाव जारी रखती। लेकिन ये नियम ये सुनिश्चित करता है कि जब आप समान काम के लिए समान वेतन की तुलना कर रहे हो तो आप पूरी तस्वीर देख रहे हो, यानी टोटल पे आउट, ना कि केवल वो हिस्सा जो 50% टेस्ट के बाद बचा है। ये जेंडर समानता के लिए चुकाई जाने वाली एक बहुत ही छोटी सी प्रशासनिक कीमत है। देखिए, मैं जेंडर इक्विटी के लक्ष्य के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि समान काम के लिए समान वेतन हमारा बुनियादी और नैतिक हक है। लेकिन मेरा विरोध इस तरीके से है। कानून बनाने वालों ने एक ही परिभाषा के भीतर दो अलग-अलग परिभाषाएं ठूस दी हैं। अगर आपको जेंडर इक्विटी के लिए तुलना करनी ही है तो आप सीधा टोटल सीटीसी या कुल पारिश्रमिक की तुलना क्यों नहीं करते? इसके लिए वेतन की कानूनी परिभाषा के अंदर एक अलग सब रूल बनाकर उसे इतना कॉम्प्लेक्स करने की क्या जरूरत थी? आप रिस्क मिटिगेशन के नाम पर कंपनियों के लिए एक नया और बहुत बड़ा रिस्क पैदा कर रही हैं। जब आप एक पुरानी सड़ी हुई व्यवस्था को पूरी तरह से बदलते हैं तो थोड़ी बहुत जटिलता तो आएगी ही, लेकिन ये नया कोड उन पुराने लेबर कानूनों की तुलना में बहुत स्पष्ट है जो आपस में ही टकराते रहते थे। स्पष्टता? मुझे तो कहीं स्पष्टता नहीं दिख रही। और अगर हम स्पष्टता की बात कर ही रहे हैं तो हमें रेम्यूनरेशन इन काइंड यानी वस्तुओं के रूप में दिए जाने वाले वेतन के उस 15% वाले नियम को भी देखना चाहिए। ओहो, वो 15% वाला नियम। मुझे लगता है कि ये इस पूरे लेबर कोड का सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव हिस्सा है, जो कि किसी भी कानून के लिए बहुत खतरनाक बात है। आपको ये सब्जेक्टिव कैसे लग रहा है? ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। कानून कहता है कि अगर कंपनी आपको नकद के बदले कोई सुविधा या वस्तु देती है, जैसे फ्री खाना, फूड कूपन्स, कंपनी की कार या रहने के लिए फ्लैट, तो उस सुविधा का मूल्य देखा जाएगा। अगर वो आपके कुल देय मजदूरी के 15% से कम या बराबर है तो उसे वेतन का हिस्सा मान लिया जाएगा। सिंपल। लेकिन ये नियम आखिर लाया ही क्यों गया? क्योंकि ये पुराने समय में फैक्ट्री मालिक या एम्प्लॉयर्स क्या करते थे, वे अपने कर्मचारियों को आधी सैलरी कंपनी के स्टोर के फूड कूपन में या फ्री क्वार्टर के रूप में दे देते थे। हाँ, कैश बचाने के लिए। बिल्कुल। इससे उनका कैश आउटफ्लो कम हो जाता था। और सबसे बड़ी बात,
पीएफ और बाकी बेनिफिट्स की कैलकुलेशन से वो बड़ा अमाउंट बाहर हो जाता था। 15% की कैप लगाकर सरकार साफ साफ कह रही है कि थोड़े बहुत पर्क्स देना ठीक है, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयज को कैश की जगह सिर्फ सामान में पेमेंट देकर अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। ये कर्मचारियों के नकद वेतन की रक्षा करता है। मंशा बहुत अच्छी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मंशा पर मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर, ग्राउंड जीरो पर, ये 15% का रूल ऑडिटर्स के लिए लड़ाई झगड़े का खुला निमंत्रण है। आप कह रही हैं कि वस्तु या सुविधा का मूल्य देखा जाएगा। ये मूल्य तय कौन करेगा? उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकाला जाएगा, जो भी मौजूदा बाजार भाव है। और फेयर मार्केट वैल्यू एक बहुत ही हवाई कंसेप्ट है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी ने आपको रहने के लिए एक रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है। एचआर टीम ने कैलकुलेट किया और कहा कि इस फ्लैट की मार्केट वैल्यू आपकी कुल सैलरी का 14% है। ठीक है। इसलिए ये 15% की लिमिट के अंदर है और पूरी तरह से सेफ है। अब अगले साल एक सरकारी लेबर ऑडिट होता है। लेबर इंस्पेक्टर आता है और कहता है, नहीं, इस इलाके में तो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हैं। मेरे हिसाब से इसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपकी सैलरी का 16% है। तो उस स्थिति में कंपनी अपनी डॉक्यूमेंट्स और असेसमेंट दिखा सकती है। लेकिन अगर इंस्पेक्टर की बात सही मानी गई तो सोचिए क्या डोमिनो इफेक्ट होगा। जैसे ही वैल्यू 15% को क्रॉस करेगी, केवल 15% तक का हिस्सा ही वेतन माना जाएगा और उसके ऊपर का जो 1% एक्स्ट्रा है उसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से बदल जाएगा। सिर्फ 1% के वैल्यूएशन डिफरेंस से आपकी पेरोल कैलकुलेशन, आपकी पीएफ लायबिलिटी सब कुछ गलत साबित हो जाएगी। ये क्लैरिटी नहीं है, ये कंपनियों को सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के जाल में फंसाना है, जहां हर ऑडिटर अपनी मर्जी चला सकता है। आप 1% के अनुमान की गलती पर कंपनी को डिफॉल्टर घोषित कर देंगे। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं। मार्केट वैल्यू कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी इंस्पेक्टर मनमाने ढंग से तय कर दे। इसके लिए हमारे देश में इनकम टैक्स एक्ट में पहले से ही परक्विजिट्स के वैल्यूएशन के स्पष्ट दिशा निर्देश मौजूद हैं। पर इनकम टैक्स और लेबर लॉ अलग अलग चीजें हैं ना? हाँ, लेकिन आधार तो वही है। अगर कोई कंपनी पारदर्शी तरीके से उन नियमों का पालन करते हुए वैल्यूएशन कर रही है, तो वो आसानी से ऑडिट में इसे साबित कर सकती है। डरने की कोई बात नहीं है। समस्या उन कंपनियों को होगी जो 15% की लिमिट को चालाकी से बाईपास करने की कोशिश करेंगी। मुझे लगता है कि हम यहाँ एक मूलभूत अंतर पर पहुंच गए हैं। आप इस पूरे कोड को एक ऐसे हथियार के रूप में देख रही हैं जो उन 10% चोर कंपनियों को पकड़ने के लिए बना है जो जानबूझकर सिस्टम को चीट करती हैं। मैं इसे हथियार नहीं कहूंगी। और इस चक्कर में आप उन 90% ईमानदार कंपनियों पर एक ऐसा भयानक प्रशासनिक बोझ डाल रही हैं जो बस नियम का पालन करना चाहती हैं। जब आपको हर महीने अपने कर्मचारियों के 40 से अधिक पेरोल कंपोनेंट्स का एनालिसिस करना पड़े, तो जीरो डिफॉल्ट एक मिथक, एक सपना बनकर रह जाता है। मैं इसे प्रशासनिक बोझ थोपने के रूप में नहीं, बल्कि सिस्टम को साफ करने के एक अवसर के रूप में देखती हूँ। पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी थी। सेक्शन 2Y की इस नई परिभाषा ने पुराने श्रम कानूनों की अनगिनत और विरोधाभासी परिभाषाओं को खत्म कर दिया है। खत्म कर दिया है या एक नई और ज्यादा जटिल परिभाषा में बदल दिया है? नहीं, इसने एक मजबूत और एकीकृत वैधानिक ढांचा दिया है। 50% का नियम और बेसिक पे को प्रोटेक्ट करने के उपाय ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय के वेतन को आर्टिफिशियली कम न किया जा सके। कर्मचारियों को उनका वो पूरा पैसा मिले जिसके वे हकदार हैं, खासकर जब बात उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स की हो। थोड़ी मेहनत लगेगी, कुछ अड़चनें आएंगी, लेकिन लंबी अवधि में ये व्यवस्था भारतीय लेबर मार्केट में वो पारदर्शिता लाएगी जिसकी हम सालों से मांग कर रहे थे। मैं ये स्वीकार करता हूं कि इस कानून का अंतिम लक्ष्य कर्मचारियों की भलाई है, लेकिन एक अच्छा कानून वो होता है जिसे बिना किसी कंफ्यूजन के लागू किया जा सके। मेरा स्पष्ट मानना है कि 15% इन काइंड रूल की सब्जेक्टिविटी, 50% नियम का वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच और सेकंड प्रोविजो में एक ही कंपोनेंट को एक जगह बाहर रखना और दूसरी जगह जेंडर इक्वालिटी के लिए अंदर डालना, ये सब कंपनियों के लिए पेरोल सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण बना देता है। बिना गलती किए अनुपालन करना इस ढांचे में लगभग असंभव है, क्योंकि नियम स्वयं एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ये एक ऐसा समाधान है जो अपने साथ नई और अधिक खतरनाक समस्याएं लेकर आया है। ठीक है, हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि हम असहमत हैं, लेकिन एक बात पक्की है, कोड ऑन वेजेस 2019 में वेजेस की ये नई परिभाषा कोई छोटा मोटा एचआर अपडेट नहीं है। ये रोजगार अनुबंधों और हमारे टेक होम पे के पूरे गणित को जड़ से बदलने वाली है। बिल्कुल। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं
तो तैयार रहिए क्योंकि आपकी सैलरी स्लिप का स्ट्रक्चर बहुत जल्द बदलने वाला है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी सैलरी स्लिप पर इसका क्या असर होगा, तो इस कानून की गाइडलाइंस में दिए गए उन 40 से अधिक पेरोल कंपोनेंट्स की लिस्ट को जरूर देखें। तो अंत में सवाल यही है, क्या 50% का ये नया बाउंसर आपके हकों की रक्षा कर रहा है, या ये एचआर और ऑडिटर्स के लिए एक नया सिरदर्द बन गया है? हम इसका फैसला आप पर छोड़ते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।